My dear friends, welcome to Sur Sangam Reflections from Jaipur. This Sunday, I am troubled with a question that comes to my mind again and again, namely the story of Job. Job, as you know, is the innocent person living according to the way of the Lord. And he is enjoying everything. All that he has is because of his goodness. But a day comes when he is terribly suffering. Suffering so bad that he doesn't deserve it. And therefore, people around him tell him, you better curse God. Why do you still trust him and believe in him? But then Job doesn't do that. He is always faithful to God. He says, God has given me, God has taken away. Holy be his name. Dear friends, same thing we feel in the letters of St. Paul. Paul, as we see in the way he writes, looks as if he has no troubles at all. He's always talking about God. He's talking about goodness. But he himself describes they had suffered terribly. He was shipwrecked. He was flogged. He was put in the jail several times. He was rejected by the people. Yet again and again he comes back and says, no, woe to me if I don't preach the gospel. Similarly, we have Jesus himself. Today in the gospel we see he goes and heals people. He touches them and then he takes time out. He tells his disciples, let us take time out and let us go back to the roots where we pray to God and re-energize ourselves. मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है. हम कभी सोचते हैं कि जो भी जिंदगी में जो दुख तकलीफ है तो मुझे क्यों आता है. और ऐसा हर व्यक्ति सोचता है और वो किसी और से कंपेयर करता है, तुलना करता है. आप देखो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके पास सब कुछ है. और कोई और सोचता है उसके पास सब कुछ है, केवल मैं ऐसा नहीं. लेकिन ऐसी बात नहीं है. हर व्यक्ति के जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा टर्मोइल आ जाता है और वह किंग कर्तव्य भी मूड हो जाता है. यानी वो नहीं जानता मैं क्या करूं क्या ना करूं. लेकिन एक बात है, जब भी ऐसे मौका आ जाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे पास जो कुछ भी है निकल जाता है, तब हम जिंदगी को एक और रूप से देखते हैं कि जिंदगी का मतलब, असली मतलब हम तभी समझते हैं. वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ ओनली व्हेन वी आर इन ट्रबल. देन वी सी द डेप्थ ऑफ लाइफ. And that is what happens with Jesus. That is what happens with Paul. And that is what happens with Job as well. We see in the world as well. आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो असली अच्छे लोग हैं और हम सोचते हैं उनको क्या ऐसा हुआ, और शायद उनको भी लग रहा होगा. लेकिन ऐसे लोग हैं जो डिटर्मिन्ड हैं, वो डरते नहीं हैं. वो जिंदगी में जो तूफान आ जाता है उसको पार करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. कभी हम ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि हम डरपोक हैं. हम मरने के पहले ही मर जाते हैं. इसलिए सही कहा गया है कि कुछ लोग केवल एक बार मरते हैं, बाकी तो बार बार मरते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर हम ईश्वर में हम भरोसा रखते हैं, अगर हम ईश्वर को भली भांति जानते हैं, हमारे दिल के हृदय के तल से अगर हमने प्रभु को पहचाना है, तो किसी प्रकार से भी डरने की जरूरत नहीं है. और ये तभी हो सकता है जब हमारी जिंदगी न केवल भारी चीज से बल्कि ईश्वर से अंदरूनी रूप से जुड़ा हुआ है. डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज very difficult for us to understand why we sometimes suffer endlessly or why some innocent people suffer. But the meaning can come only when we are able to swim across the difficulties. When we do that, then we see meaning in every person we meet, and through them we find God helping us. God is always with us. He will not leave us. Even in the darkest moments when we go through the tunnel, we know that at the end of the tunnel, there is some light. Maybe things may not happen during my time. It may happen later on. But then
there is always something that we say, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है. So, let us all get together, pray to God, very especially when we are in trouble. Tell Him, Lord, be with us. Thank you and God bless you.